Hello everyone, this is me Gurjant Singh and the topic is Salient Features of Indian Constitution. So Indian Constitution is a written constitution. It is a supreme law of a land and it is a controlled constitution that also provide a limited government, sovereign powers divided among the executive, legislature and judiciary. The powers are defined in the constitution and no one can go beyond its own powers. जो भी पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दे रखी हैं किसी भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को दे कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट पावर्स so it contains the basic law according to which the validity of law enacted by the legislature is determined. इसके अंदर बेसिक लॉ है जिसके द्वारा वैलिडिटी ऑफ द लॉ जो कि इनेक्ट की गई है लेजिस्लेचर द्वारा वो डिटरमाइन करेगी. कोई भी लॉ अगर लेजिस्लेचर बना रहा है तो वो डिटरमाइन करेगा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन. ए लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर कैन नॉट वायलेट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कोई भी कानून अगर लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया है और वो वायलेट कर रहा है किसी भी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा. And it also confers the powers on the organs of the government. जो भी organs of the government है इनके ऊपर ये power confer करता है और limitations भी impose करता है. ये constitution एक lengthiest, bulkiest and most detailed constitution है. जब ये constitution शुरुआत में आया था तो इसमें 395 articles थे जो कि divided थे 22 parts के अंदर and its schedules के अंदर. But after the passing of the Constitution 94th Amendment Act 2006, it contained 447 articles divided into 24 parts and 12 schedules. Now the framer of the Constitution gained experience from the known constitution of the world. जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि भी ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे. बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे, इनके पास जितनी डिग्रियां हैं गिनो तो कम है शायद, मैं तो गिनना भी नहीं चाहता क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि भी क्या डिग्री करी थी. पर जब इनको कमेटी का चेयरमैन बनाया गया तो इन्होंने देश के कई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े और उन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो देश के हालात इन्होंने जब देखे तो वो जब इन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े तो उनको ये देखकर लगा कि भी इस कॉन्स्टिट्यूशन का ये पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था. अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ आवर नेशन ही हैड मेड अ बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन and that is, and it deals with the organization and structure, not only the central government but also state. ये central government की ही powers को या उसकी limitations को नहीं बताता, it also tells about the states and has used many unwritten conventions of the British Constitution such as collective responsibility of the minister and the parliamentary procedure. Now the constitution also contains words like sovereign, socialist, secular, democratic, republic. The meaning of sovereign literally means the ultimate, the superior who recognizes no master over him. Any country does not want to be ruled by anyone the same way we were get ruled by the Britishers. जैसे कि ब्रिटिशर्स द्वारा हम रूल किए गए थे तो पर हमारी आज़ादी के लिए हम लड़े. वो किस चीज के लिए लड़े थे? For the supreme power, so we can rule our country by ourselves. Now the term socialism is also used in constitution. That is used also in democratic as well as in socialistic constitution, and which means production and distributions are state owned. Whatever the things are there that are owned by the state. But India does not go with the traditional meaning. The term as per Indian socialism is a socialist पैटर्न. ये एक ऐसा पैटर्न है जिसके अंदर हर एक इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है इंडिविजुअल प्रोग्रेस के लिए. Now the words come as secularism. Secularism means that the India does not have any religion of its own, the state, like the government does not have any religion. That doesn't mean that the government is an atheist. It means that in the matter of religion the state is neutral. He will not say anything at there, but he will sort out the problems if there is a kind of a problem. Now democracy is defined as a government by the people, of the people and for the people. At the time when we attain the age of 18 we all are excited for our first vote, to vote, to elect our own government. This is called democracy. This is how you make your own government to govern you. Now republic in narrow sense, if we talk about it, that is that head of state is an elected person, and in wider sense if we talk about that the supreme power of the rest in the people and their elected representatives और ऑफिसर. जो सुप्रीम पावर है वो लोगों के अंदर है और लोगों के द्वारा उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स और ऑफिसर्स के अंदर है.
ताकि वो उन्हें गवर्न कर सके. बट एज अपोज टू वन गवर्नड बाय किंग और सिमिलर रूलर, द प्रीएम्बल यूज द टर्म इन बोथ सेंस. ये टर्म जो है रिपब्लिक की, ये दोनों सेंस के अंदर यूज करी गई है प्रीएम्बल के अंदर. पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मीन्स government at both center and state levels. The essential characteristics of parliamentary form of government are that under such government, the head of the state is a merely constitutional head. ये constitutional head है, ये constitution द्वारा बनाया गया है. He is an appointed person by the governor or by the president. In the union, by the president, and in the state, it is by the governor. So he's a constitutional head. No one can remove him. Like, the executive head, the executive vested with the real powers is made answerable to the legislature. जो भी executive है, जो भी उसको real power दी गई है, वो answerable होगा legislature को. जो president है इंडिया का, वो constitutional head है of the state, as council of minister जो है उसको इधर advise करती है for discharging his functions. अब जो council of minister है, ये collectively responsible है to the house of people. The same pattern has been adopted in state also. जैसे कि council of minister है, collectively responsible है, same like in the states with some modification has been adopted. Federation with strong centralization. The foundation of the federation थी जो, वो लीड करी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर. जो इसका चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स था फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये था कि ये एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो सुपरमेसी होगी वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लाई करेगी, और जो प्रोवाइड द डिविजन्स ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल एंड रीजनल गवर्नमेंट. जैसे कि हम डिविजन्स ऑफ पावर देखते हैं सेंट्रल और स्टेट के अंदर, इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट. दिस इज द थिंग देयर. इट इज अ रिच्ड कॉन्स्टिट्यूशन. इट इज हार्ड टू अमेंड. It is about, like, we can amend our constitution, but there isn't a kind of a special provision for that. It provides independent judiciary. That judiciary is, there is a separation of power in India. We use separation of power, the theory given by Montesquieu, that the legislative, executive and independent judiciary and the judiciary are independent from each other. The judiciary can judicial review the law made by the legislature or anything which is done by the executive. So the judiciary have a right of the discretion of judicial review. Now federalism is a way to protect the unit governments, the state governments. Federalism एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम जो state governments हैं, इसको सेंट्रल की जो टायरनी है, जो बेफालतू की पावर यूज करता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, उसके द्वारा बचा सकते हैं फेडरलिज्म द्वारा. और ये एक यूनिटरी कैरेक्टर एक्वायर कर लेता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी. लाइक वी हैव डिविजन्स ऑफ पावर राइट नाउ, लाइक द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट. So if he cannot control the state conflict, then he can tell the president about it, and the president will acquire the unitary character. So he will check out, the union will check out all the a unique blend of rigidity and flexibility. So now the Indian constitution is flexible as well as rigid. Some provisions जो हैं constitution के, वो amend किए जा सकते हैं by simple measure and procedure as is followed by for enact ordinary laws, while the rest of the constitution is amended by the special more difficult and technical procedure जो कि require करता है special majority को in the House of Parliament. And there are special provisions concerning both the union and state also for the amending any of these provisions. Not only special majority but also ratification by at least half of the state legislature. कि भी कुछ ऐसे special provisions भी हैं union और states के concern में, जो कि amend किए जा सकते हैं with special majority, पर उसमें ratification भी होनी चाहिए at least half of the state legislatures. Adult suffrage, that Article 326 has amended by the Constitution 61st Amendment Act 1989, और ये सिक्योर करता है एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया को हु अटेन्स द एज ऑफ 18 ईयर्स. जो कि हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, वो यहीं से ही चालू हो जाती है, क्योंकि एक टाइम था जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग हमको एक कॉम्युनल अवार्ड अनाउंस कर दिया गया था, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्ट्रोड्स होने थे, हर एक धर्म जाति के लोगों के अलग अलग होने थे. तो ये जो चीज थी हमारी यूनिटी ऑफ इंडिया को खराब कर रही थी, जिसकी वजह से हमने उस चीज को
स्वीकारा नहीं, और इस 18 साल जो यूनिवर्सल थिंग होती है कि भी हम सभी वोट कर सकते हैं, एक only basis of that we can elect our representative to the legislature both central as well as state. सिंगल सिटीजनशिप का यहाँ पर भी यूज किया गया है कि भी जैसे कि यूएसए में टू सिटीजनशिप्स होती हैं, एक यूएसए की मेन होती है और एक स्टेट्स की होती है, जो वहाँ के स्टेट्स हैं, अगर वहाँ की सिटीजनशिप, वहाँ का पासपोर्ट अलग होता है। ऐसे ही यहाँ नहीं है, यहाँ इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप को यूज किया जाता है ताकि किसी को प्रॉब्लम ना आए, कोई भी अगर कोई बिजनेस करना चाहता है कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर। बट इन यूएसए इट इज हार्ड टू गेट ए लाइसेंस इफ यू वांट टू वर्क from different state to different state, and the priority will always be given to the person who is already a citizen of that state, not to a new person. And fundamental rights are also provided in this constitution, and that chapter is known as Bill of Rights for the people of India. It not only declares these fundamental rights but also provide enforcement of them. अगर कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है तो ये उनको प्रोटेक्ट ही नहीं करता, एक्चुअली ये इनकी इन्फोर्समेंट की भी लाइबिलिटी लेता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स आ जाते हैं, स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और ये सेट आउट करता है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी टेकन बाय द स्टेट इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। कोई भी कार्य अगर सेंटर और स्टेट ने करना है तो यहाँ से इसके एम ऑब्जेक्टिव्स लिए जाएंगे। स्टेट फंडामेंटल ड्यूटीज, Part 4A lays down a fundamental duties for the citizens of India also. It does not only give you rights but also give you duties. So you have to follow it. Okay. These citizens observe certain basic norms of democratic conduct and behavior. जिसके द्वारा लोगों को पता हो कि भी क्या बेसिक नॉर्म्स हैं हमारे और क्या डेमोक्रेटिक कंडक्ट है, उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग वो काम करे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, like we earlier discussed about it, independent judiciary means that the judiciary have a power of judicial review if there is any contravention with the constitution by the executive or the legislature. The judiciary can judicially review it, and if it is unconstitutional, they can declare it invalid. Now, preventive detention. This is for the preventive detention. We can say that it empowers the states to enact a law providing for a preventive detention of a person even during a peace time. If we think कि भी person, कोई अगर हमको ऐसा लगता है कि भी कोई बंदा है कि भी इसके बाहर रहने से देश या किसी स्टेट के अंदर जो लोग पीसफुली रह रहे हैं उस उनकी पीसनेस को कोई खतरा है, तो जो सरकार है वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में उस बंदे को गिरफ्तार कर सकती है। थैंक यू वेरी मच।